Alright, the question here is saying a cylinder has a radius of 6 centimeter. A cylinder has a radius of 6 centimeter and a height of 15 centimeter. A hole in the shape of a cone is bored into one of its ends. If the cone has a radius of 3 centimeter, find the volume of the remaining solid. You can imagine that for example it is a wooden piece. आप ये imagine करें कि एक wooden piece है जिसमें एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है. एक वुडन पीस है जिस जो सिलेंडर की फॉर्म में एक वुडन सॉलिड है, लकड़ी का वुड का एक सॉलिड पीस है जो सिलेंडर की फॉर्म में है, ठीक है. इस वुड में से ड्रिल करके एक कोन को रिमूव कर दिया गया, ठीक है. ये एक कोन थी, उसको ड्रिल किया, आपने देखा होगा कारपेंटर्स को काम करते हुए. सो वुड को एक सर्टेन शेप में, कोन के शेप में ड्रिल करके इस सॉलिड में से रिमूव कर दिया. व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. यानी उसको रिमूव करने के बाद, आफ्टर रिमूविंग दिस कोन फ्रॉम दिस सिलेंडर, what is the remaining solid. This is what you have to find out. Okay, so how to find out? Simply in order to find out the volume of remaining solid, we will remove the volume of cone from the volume of cylinder. So we will say volume of cylinder minus the volume of cone, right? And what is the volume of cylinder? Volume of cylinder is calculated by formula pi r square h. Volume of cylinder का formula होता है pi r square h. इसमें से हम माइनस करेंगे 1/3 pi r square h. This is the formula to calculate the volume of cone. But be careful, where r is written, जहाँ पर r लिखा हुआ है, over here you are going to input the radius of cylinder, and in this r you are going to input the radius of cone, ठीक है. जहाँ कोन की बात हो रही है वहाँ कोन का रेडियस इनपुट करेंगे, जहाँ सिलेंडर की बात हो रही है वहाँ सिलेंडर का रेडियस इनपुट करेंगे, ठीक है. सो लुक, over here this is going to be pi in place of r you will input 6 square, and in place of h you are going to input 15. 15 is the height of the cylinder. Then again 1/3 pi, in place of r you can write 3, because this the radius of cone is 3, multiply by h. H is the height is 15. Now solve it. This is going to be 6 6 is 36, and 36 multiplied by 15 will be 540. So this is 540 pi minus, okay, this is 3 square, so 3 will be cut. This will become 3 times 15. Now 3 times 15 is 45, so this will become 45 pi. Now 540 pi minus 45 pi, 540 minus 45, this is 495 pi. This is 495 pi. Now pi has a value of 3.142, so 495 multiplied by 3.142. So 495 multiplied by 3.142, 495 multiplied by 3.142
This is 1555.3. 1555.3 centimeter cube. This is the volume of remaining solid. ठीक है. Let me recap once again. There was a solid cylinder, and we have drilled out का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए. प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि कारपेंटर्स किस तरह से वुड में ड्रिलिंग करते हैं. तो उसमें से एक कोन का फॉर्म का सॉलिड रिमूव कर दिया. वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. So how will we find out the remaining solid? First we will find out the volume of entire cylinder, then we will find out the volume of cone, and we are going to subtract the volume of cone from the volume of cylinder. This pi r square h is the volume of cylinder and 1/3 pi r square h is the volume of cone. So we are going to subtract the volume of cone from the volume of cylinder.